Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. So that I know you all are with me live in the session. We just wait for a couple of minutes until few people join in, and then we should be good to go with today's mid-market session. Sudhakar ji, good afternoon. Audio, video clear. Okay, perfect. Good afternoon, RD ji, Murthy ji, good afternoon. Sunesh ji, good afternoon to you as well. Namaste, all said. Good afternoon, Rakesh ji. Mohit ji, Nikhil ji, Champa ji, good afternoon. Great, superb. So let us start. So I guess most of you guys are here. So let us start off with the mid-market session today. So first up, coming up, talking about the update of the US markets. So कल अगर हम US markets देखें, so Dow Jones closed around 0.19% lower. S&P 500 closed around 0.55% lower. Nasdaq closed around 0.95% lower. So there were like a couple of news coming in from the US. One is, if you have heard Federal Reserve's Chairman Jerome Powell's comment saying that he believes, the equity valuations are quite high. And that was one of the reasons why the US markets saw some profit booking yesterday. Secondly, also mentioned about the prices of the other assets being very high. Like he spoke about gold, silver, Bitcoin prices are at the are at the highs here, and the fact that equity valuations not seem to be fairly priced, so that actually kind of weighed on the market sentiment in the US markets. And tracking global cues, we also opened on a negative note today. Secondly, again, there is some amendments that has been done to the H1B visa issue. So now I think based for the lottery cycle that will start now. So I think what they are going to do is they are going to give preference to it is going to be a wage-based system where people with a higher wage will get first preference compared to people with a lower wage structure. सो अगर ये दो एक एक न्यूज है जो थोड़ा सा इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़ा सा डैम्पन किया है आज. तो इसके कारण यूएस मार्केट्स आज कल के सेशन में नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए. अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें, डाउ फ्यूचर्स इज फ्लैट, इट्स अप अराउंड 0.17%. So we can expect a slightly flat start to the US markets today. अगर हम यूरोप मार्केट्स की बात करें, सो जर्मनी वाज अप 0.36%. whereas अगर हम लंदन देखें तो लंदन वाज डाउन 0.04, अगेन फ्लैट क्लोजिंग. फ्रांस में भी फ्लैट क्लोजिंग, तो ऑलमोस्ट 3 points lower. If you look at Eurostox index, that closed around 0.24% higher. So again, Europe markets were mixed yesterday. If we look at the Asian markets, so again, if we look at Nikkei is up 0.3%, Hang Seng is up 1.3%. So Hang Seng again, आपका best performing Asian index है. If we look at Shanghai is also up again 0.83%. If you look at Kospi is down 0.4%. And अगर हम if you look at our markets, if you look at Nifty and Sensex, so both are down in the range of 0.25 to 0.3%. Sudhakar ji saying we did not get this concept of wages. So see, lottery system there was no concept of people with a higher wage will get preference first, or people with a lower wage will get any preferential treatment here. So I think lottery is, jiska bhi naam aaya, I think they would get the visa. I mean, that is how the system is, right? Now considering the fact that we have that जो $1 lakh का जो news है वो तो है ही, but I think what I have read in the morning is they are going to move to a wage based system. So let's say if there is any candidate who is being selected to work in the US,
And so based on the wage that is offered to the candidate, so let's say if a candidate is offered a higher salary compared to the candidate that has offered a lower salary, so जिस जो कैंडिडेट का जो सैलरी जो कैंडिडेट का हायर सैलरी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा कंपेयर टू द वन हु इज बीन selected for a lower wage structure there. A lot of people who go there, you go like the mid-level wages hota hai. They don't, not everyone gets to a higher wage system there. So now I think there is a new amendment that has come in. So jiska salary it's on the higher side, they will get first preference for the H1B visa compared to the people who have a lower wage. I think that is what I understood from the message here. So that was about the amendment that has come in the H1B visa. Maybe you can read up on that later, Sudhakarji, but I think this is what the gist is. Now, if you look at the macro indicators, अगर हम dollar index की बात करें, so dollar index again 2 दिन से ये 20-day EMA के आसपास यहाँ पे resistance लेते हुए नजर आया था, and then it is still trading at 97 at this point. So I think nothing major has changed in the US dollar index. अभी भी अगर हम ट्रेंड देखें तो अभी भी वो ट्रेंड डाउन ही है. So as long as as long as it trades below 98 99 there is not going to be much worry for our markets. If you look at the US government bonds 10-year yields, so again the yields have kind of, they're taking resistance around its 20-day EMA here. It's around 4.1%. So again, nothing, no significant movement in the US government bonds 10-year yields as well. If you look at India VIX is at 10.59. It's marginally down 0.26%. Again, no signs of any panic, fear, or greed in the markets. Volatility is still at the lowest end of our historical volatility. And India VIX is almost trading in a range. I mean, it's usually if you see India VIX का जो range है वो around 12 to 13 के आसपास है. We are still trading below that. हम लोग 10.6 के आसपास है. And historically the premiums are also cheap currently in the markets, and that has got to do with the fact that the volatility is extremely low at the current point. If you look at dollar by rupee again, so almost we are rupees at the record lows. अगर हम देखेंगे rupees at dollar is at 88.71. I think this is, a lot of people are kind of ignoring the fact that dollar has reached 88.71. I think everyone is talking about H1B visa. They're talking about impact on the IT sector. People are talking about Jerome Powell's comments and all. But I think a lot of people are ignoring the fact that whenever dollar appreciates against the rupee, it's not actually a good sign for our markets. And dollar being at 88.71 is definitely not a good sign, because जब तक आपका डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तब तक FIIs flows फिर से आएंगे नहीं. और हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने से FIIs have been hesitant to invest money in our markets. Maybe at some point of time later they might come in our markets, but they will only come in once rupee starts appreciating. जब तक डॉलर अप्रिशिएट होगा, दे विल काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम आवर मार्केट्स. एंड हमें जैसा भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि चॉपी मूवमेंट है, 3-4 दिन हम ऊपर जाते हैं, फिर एक साइडवेज मोड में चले जाते हैं, फिर देन इट कंसोलिडेट्स, फिर थोड़ा हम नीचे चले जाते हैं. अगर आप इंट्राडे भी देखोगे तो इनिशियल एक बर्स्ट मिलता है, फिर देन इंट्राडे मोमेंटम आपका फिजल आउट हो जाता है, या इनिशियली डाउन रहता है, देन इट गोज अप, इवेंचुअली टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डे इट गोज डाउन. सो यू हैव दोस चॉपी मूवमेंट्स. I think that is what you will keep witnessing unless and until FIIs don't really come back to our markets. And for them to come back, it's very important ये जो dollar है फिर से 87-86 levels तक आए, because dollar appreciating is kind of not a good sign for our markets. अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, so crude oil again $64 a barrel is where the support is, and on the upside around $69 a barrel is where the resistance is. So as long as crude oil इसी range में trade कर रहा है, there is no signs to worry. Gold again, it's on the rise. And the fact that you see, despite US equities doing well and our equities also seeing some kind of a pullback move, there has been a steady pumping of money that is going on in gold and silver. Usually you see gold is an hedge to the markets. It's like when the markets fall, usually gold prices go up.
But what we are seeing is the US markets are up, our markets are also seeing some pullback, and the gold is also going up. So all the three, whether it's US markets, Indian markets, gold or silver, all three are moving in one direction. So somewhere, I don't, there is a mismatch here. I do कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं मालूम है जो आगे जाके होने वाला है, आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज एन अनरियल राइज इन द गोल्ड. इफ यू लुक एट गोल्ड at this point, it's at around from $3,500 an ounce, it is has gone to $3,774 an ounce here. I mean, look, China is buying a lot of gold. I think even a lot of central banks, I think Indian bank, जो इंडियन का जो आई थिंक रिजर्व बैंक है, इवन वी आर काइंड ऑफ accumulating a lot of gold here. So gold going up at this rate, so don't know where we are going to land on this, but again there is something, I don't know what is the news. I'm just trying to read between the lines at this point, not trying to scare you. Even I don't know what is going to happen later, but again, all the markets moving in tandem is something to worry about. Now if you look at silver again, agar hum silver ki baat kare, even silver is on the rise. Silver is at $44 an ounce here, so we almost, and silver be fresh breakout deke, I think it looks like both silver and gold are likely to continue moving higher. I think silver can move towards $46, $47 an ounce, where gold can, at least move towards 3,900, $4,000 an ounce here. So both gold and silver doing relatively well compared to the equities. And also for the fact that yesterday's comment of Federal Reserve Chairman saying equity valuations are highly valued, and the fact that banks have been pumping in gold and silver since quite some time now. So we'll have to wait and watch and to see where the markets do land up going forward. अगर हम FII की एक्टिविटी देखें यहाँ पे, सो कैश मार्केट में अगेन another round of selling, so around 3,550 crores of selling in the cash market by the FIIs yesterday, and पहले 2 दिन में almost 6,460 crores का selling हमें देख लिया है. If we look at the index futures, again marginal improvement in the long short ratio. From minus 1,44,000 contracts, हम 1,42,000 contracts पे आ गए, जिसकी वजह से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में एक स्लाइट इंप्रूवमेंट नजर आई. फ्रॉम 13.27% वी हैव गॉन टू 13.8%. अगेन नो सिग्निफिकेंट चेंज. अभी भी FIIs के पास शॉर्ट पोजीशंस काफी ज्यादा है. नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेक्स्ट ट्यूसडे फर्स्ट टाइम ट्यूसडे को हमारा मंथली एक्सपायरी होगा. अब तक ऑलवेज थर्सडे को होता था एंड फ्राइडे को रोल ओवर आता था, बट नाउ विल हैव अ रोल ओवर ऑन ट्यूसडे. So it will be also very important to see how traders adjust their positions as well, because Thursday ko aake Friday you would see some impact of the rollovers on the markets on Friday, and then Monday ko again we would have the new series that is starting out, but we'll have the new series starting out in the midweek itself from next Wednesday. Thursday again we have an holiday on account of Dasara, then we have Friday, so we'll have to see how this new rollover which is going to come on Tuesday have an impact on the market's volatility. So that is also one thing to be watched out. If we look at Nifty today, so first of all, I would like to draw your attention to Nifty's daily chart. अगर हम डेली चार्ट देखेंगे, सो पिछले 4 दिन से निफ्टी एक एक करेक्टिव मोड में चला गया, जहाँ पे एवरीडे निफ्टी इज काइंड ऑफ हिटिंग अ न्यू लो. बट वन इम्पोर्टेंट इज इफ वी ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर ये जो लो है 29 अगस्त का, जहाँ पे 24,404 का लो था, और 18 सितंबर को 25,450 के करीब जो हाई था, अगर ये जो पूरा मूव का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए, वो ऑलमोस्ट अब यू कैन निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड इट्स 38.2% फिबोनाची लेवल, विच इज अराउंड 25,050. और अगर आप वही 25,050 लेवल देखोगे, वहां पे निफ्टी का 20 डे EMA भी प्लेस्ड है. सो 25,050 में आपका 20 डे EMA होना निफ्टी का, और उसी लेवल पर 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी होना, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी. सो ये जो 25,000 25,500 ये जो जोन है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा निफ्टी के लिए. If Nifty breaks below 25,000, then chances are that हम और नीचे जाए. Then again we might test 24,800 and 24,500 on the downside. But as long as Nifty hold करता है 25,000, 25,050,
chances are that it can remain sideways to positive here. And if you look at the intraday movement today, so intraday again we had Nifty opened on a weak note. It went down even lower. हमें एक lower low मिला था. Then around 25,030 के आसपास Nifty kind of took support. और वहां से हमें एक एक पुल बैक भी नजर आया था यहाँ पे. बट आई फील एज लॉन्ग एज आई थिंक इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं की लेवल की बात करूं, दैट विल बी अराउंड 25,115 because that is where the previous intraday high is placed. अगर हम 25,115 के ऊपर जाते इंट्राडे बेसिस पे तो हो सकता है हम फिर से डे हाई के आसपास जाए जो कि 25,150 लेवल के आसपास है. बट इफ वी ब्रेक बिलो द प्रीवियस लो विच इज अराउंड वही 25,050 जो कि हम एक की सपोर्ट है जहाँ पे 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है प्रायर अपमूव का, और वहां पर डेली चार्ट पर 20 ये में भी है. तो अगर हम 25,050 के नीचे जा सकते हैं, हो सकता है हम फिर से 25,000 टेस्ट करें. और बाई चांस अगर कल हम 25,000 के नीचे खुलते हैं तो हो सकता है जो करंट वीकनेस नजर आ रहा है पिछले 4 दिन से वो और कंटिन्यू हो. But as long as 25,000, 25,050 holds, chances are that Nifty can remain sideways or move higher. But if at all we break below 25,000, then हो सकता है थोड़ा selling pressure और extend हो. So this is something that need to track in Nifty. But अगर हम option chain की बात करें फिलहाल के लिए, अगर हम total OI देखें, so 25,000 में काफी strong put writing है जो फिलहाल के लिए ये indicate करता है कि 25,000 काफी एक strong support होगा Nifty के लिए. सो जब तक हम 25,000 निफ्टी होल्ड करते हैं, लाइक आई सेड, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अभी फिलहाल के लिए पुट राइटर्स है, और आज के दिन में भी अगर हम देखें तो 25,000 में पुट राइटिंग काफी ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग योर. मतलब बुल्स का प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बेयर्स एट दी 25,000 स्ट्राइक. सो बाई चांस इफ बुल्स आर लाइक दे एग्जिट फ्रॉम आवर मार्केट्स, यहाँ पे पुट राइटर्स एग्जिट करते हैं और कॉल राइटर्स अपना प्रेशर और बनाते हैं पुट राइटर्स पर, और हमें 25,000 के नीचे एक ब्रेकडाउन मिलता है, देन चांसेस आर दैट निफ्टी कैन मूव डाउन लोअर. So keep an eye on 25,000. 25,000 is a very important level in Nifty to watch out. If you look at Sensex, so Sensex का भी pretty similar story है. अगर हम Sensex देखें तो Sensex भी अगेन अगर आप देखोगे आज अराउंड 20 डे ये में के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा नीचे गया था, 20 डे ये में ब्रेक हुआ था डेली चार्ट पर, and then it is marginally trading about 20 day EMA here. I think one important sign is अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपना 20 day EMA के ऊपर क्लोज होता है और कल के सेशन में हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग मिलती है तो हो सकता है फिर से ये जो अप ट्रेंड है वो फिर से रेज्यूम हो जाए. बट बाई चांस ये फेल होता है सस्टेन करना 20 डे EMA के ऊपर, वो कि वो इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पे काम करेगा. But by chance, if we don't get a follow through buying today and if we end below 20 day EMA, हो सकता है थोड़ा weakness कल के session में भी extend हो. So important level to watch out in Sensex would be 81,500. अभी फिलहाल के लिए Sensex 81,788 के आसपास है. But अगर हम option chain देखें Sensex का, if I look at the total open interest, so 81,500 has a very strong put writing. जैसे हमने निफ्टी में देखा था कि 25,000 में एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, वैसे सेंसेक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंसेक्स 81,500 के ऊपर होल्ड करे. तो 81,500, 81,600 दोनों स्ट्राइक प्राइस में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है. और अगर हम चेंज इन ओआई भी देखें तो चेंज इन ओआई आज के दिन में इवन 81,500, 81,600 में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नजर आ रही है, जो ये इंडिकेट करता है कि बुल्स अभी भी नीचे के लेवल्स में अपना पोजिशन स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं. सो जब तक 81,500 से जब तक 81,500 में आपके पुट राइटर्स है, द ट्रेंड फॉर सेंसेक्स इज लाइकली टू बी पॉजिटिव. बट अगर सेंसेक्स 81,500 के नीचे ब्रेक करता है, आई थिंक इट इज 300 पॉइंट्स अवे, और पुट राइटर्स 81,500 से हटते हैं तो हो सकता है हम फिर से और जो वीकनेस जो चल रहा है पिछले 4 दिन से वो और एक्सटेंड हो, and maybe we can go towards 81,000 in Sensex as well. So 25,000 in Nifty and 81,500 in Sensex. These are the key levels to watch out. हाँ, बट अगर दोनों निफ्टी और सेंसेक्स 20 डे EMA के ऊपर क्लोज होता है और कल एक फॉलो थ्रू बाइंग आती है तो हो सकता है आपका थोड़ा सा एक फिर से जो पुल बैक जो हमने देखा था ये लोस से, वो फिर से वो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो सकता है. इफ वी लुक एट बैंक निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स.
अगर हम बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से देखें तो ये जो 55,600 55,660 का जो जोन है, 2 दिन बैंक निफ्टी है 55,665 55,666 के आसपास आया था और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था एंड फॉर बोथ द डेज इट हेल्ड ऑन टू इट्स 50-day EMA ऑन द डेली चार्ट। अगर आप बैंक निफ्टी का 50-day EMA देखोगे इट्स समवेयर अराउंड 55,170 55,200 मार्क। और आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी हैज ब्रोकन दैट लेवल, इट हैज गॉन बिलो इट्स 50-day EMA और वो फिलहाल तो 50-day EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो 55,200 एक लेवल था, अभी बैंक निफ्टी 55,131 के आसपास है। सो ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी आज क्या फिर से 50-day EMA के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है कि नहीं। मतलब 55,200 के ऊपर आज हमें क्लोजिंग चाहिए। जैसे हम निफ्टी और सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 20-day EMA के ऊपर क्लोज मिले, वैसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी 50-day EMA के ऊपर क्लोज करे विच इज अराउंड 55,200। अगर 55,200 के ऊपर क्लोज मिलता है और वहां से हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग मिलती है तो हो सकता है हमें एक फिर से जो एक अपमूव जो पकड़ा था बैंक निफ्टी ने वो फिर से कंटिन्यू हो। बट इफ वी गो क्लोज बिलो 50 EMA में और सेलिंग प्रेशर आता है सेकेंड हाफ में, देन हो सकता है हम we'll go down even further. I think then we can go to 54,800 followed by 54,500 in बैंक निफ्टी। और ये जो थोड़ा सा जो ये जो सेलिंग प्रेशर बना है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। So I think we are in that consolidation profit booking phase। जो एक शार्प पुल बैक हमें दिखा था लोस से, ऑलमोस्ट ऑल द 3 indices I think we are going through that corrective phase at this point of time। So it will be very important to see कि निफ्टी और सेंसेक्स 20-day EMA होल्ड करता है कि नहीं, and on the other hand it will be very important to see if bank nifty holds above 55,200 here because it's a very crucial level for bank nifty। Now, if we talk about the key sectors and the stocks to watch out, so again, the first sector that I want to talk about is your PSU banking space। So again, there is a good traction that is getting built up in the PSU space। हमने PSU बैंक बाय निफ्टी का रेशियो चार्ट में देखा था, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइक पैटर्न ब्रेकआउट मिलके एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू बाइंग मिला है। So almost all the PSU counters are doing well। So if I have to pick out a couple of names from the PSU space, one would be Indian Bank। इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरली एक अप ट्रेंड में था काफी टाइम से, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI भी 60 के ऊपर है, ADX भी राइजिंग मोड में, जो कि ट्रेंड स्ट्रेंथ के बारे में दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है उसका अप ट्रेंड। और अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 11 सितंबर से 23 सितंबर ऑलमोस्ट एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें नजर आई इंडियन बैंक में। और साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस काउंटर में। सो अगर हमें 712 715 के ऊपर क्लोज हमें मिलता है तो हो सकता है इंडियन बैंक अपना ये जो अपू है और कंटिन्यू करेगा with around 689 690 acting as a strong support for Indian Bank। The other stock from the PSU space that is doing well is Canara Bank। तो Canara Bank में हमने देखा था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलके उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू बाइंग आई थी कैनरा बैंक में। वॉल्यूम्स में भी अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी नजर आई है वॉल्यूम्स में। RSI राइजिंग मोड में है, 60 के ऊपर है, ADX भी राइजिंग मोड में है, जो कि करंट जो बुलिश ट्रेंड है जो बुलिश ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पे। So important support would be around 117 118। So as long as the price trades above 117 118, it is going to be positive for Canara Bank। I think Canara Bank can move towards the previous high, which is around 128 129। So we can see Canara Bank moving towards those zones here। The next sector that I want to talk is metal। So अगर हम metal index देखोगे, so if I talk about Nifty metal, Nifty metal is just 2% away from its all-time high। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी मेटल का ऑल टाइम हाई वाज अराउंड 10,322 और मेटल इंडेक्स इज एट 10,114। सो रफली अराउंड 1.9 to 2% दूर है अभी ऑल टाइम हाई से। एंड अब ये देख रहे हैं कि काफी टाइम से मेटल इज वन सेक्टर दैट हैज significantly outperformed the Nifty index। And again some stocks are again after taking a breather, फिर से कुछ stocks का चार्ट स्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है। सो अगर हम टाटा स्टील देखें तो टाटा स्टील ऑलमोस्ट पिछले 5-6 दिनों से
या अगर हम और एक्सटेंड करें तो 8 सितंबर से अगर हम देखें पिछले 1-2 हफ्ते से एक साइडवेज चल गया था। उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है अराउंड 170, उसी के आसपास यहाँ पे साइडवेज घूम रहा था टाटा स्टील। So yesterday we got a breakout of this zone here, and आज एक थोड़ा सा mild follow through buying आया. I won't say a very sharp follow through buying, but as long as 170 hold करता है Tata Steel, chances are that Tata Steel can move up higher. I think only if it closes below 170 we can expect some profit booking to pick pace. But as long as a 170 hold करता है, it can move higher towards 178, 180 levels in the short term. Apart from that, one other stock from the metal space that is doing well is JSW Steel. अगर हम JSW Steel की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट आके then it consolidated and again एक sharp follow through buying नजर आ रही है. ADX is in a rising mode. Again it is also trading above its key moving averages. RSI भी almost अब RSI की बात करें, so let us see what is the level for RSI. RSI is near about 74, दो overbought है, but nevertheless despite being overbought, इसका ट्रेंड जो स्ट्रेंथ है वो काफी सिग्निफिकेंट है. अगर हम बॉलिंजर बैंड्स भी देखें, इट इज द प्राइस इज नियर द अपर बैंड हियर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाता है इस स्टॉक का. So even JSW Steel is likely to move higher with around 1110 acting as a strong support for the stock here. Apart from that, one other stock from the metal space can be NMDC. तो अगर हम NMDC की बात करें तो NMDC भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है. अगर हम देखेंगे, प्राइस हैड गिवन अ ब्रेकआउट, फिर अराउंड 75 के आसपास रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद फिर से द प्राइस हैज मूव्ड अप हायर. So right now it's at 78. So 75 is likely to act as a support. So as long as NMDC 75 के ऊपर है, even the stock is likely to move up higher. ADX भी rising mode में है, which is again a positive sign. One stock, so one other sector that has given a fresh breakout in the ratio charts. अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है CPSE स्पेस पे, जो CPSE बाय निफ्टी का रेशियो चार्ट है, वहां पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो थ्रू बाइंग नजर आई है, जो ये इंडिकेट करता है कि CPSE एज अ सेक्टर कैन आउट परफॉर्म निफ्टी इन द कमिंग सेशंस. And one stock from the CPSE space again that is doing really well today is your stock name NTPC. So almost all the power companies में आज ट्रैक्शन है, चाहे वो पावर ग्रिड हो या NTPC हो या अदानी पावर. हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से almost all the power stocks में there is some traction that is building up. Now if you look at NTPC में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है. RSI भी 60 के ऊपर चला गया. ADX इज इम्प्रूविंग, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. काफी टाइम के बाद वी माइट गेट अ क्लोज अबाउ फॉलो. क्लोज तो कल मिला था 200 DMA के ऊपर, आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी मिल रहा है. सो अराउंड 340 342 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा NTPC के लिए. So if NTPC is able to hold on to 342, chances are that it can move higher towards 360 365 levels. That is where the previous swing high for the stock is placed. Apart from this, a couple of two stocks that I want to talk about. One is AB Capital. तो अगर हम AB कैपिटल देखें तो ऑलमोस्ट 9 सितंबर से अगर हम देखेंगे तो एक छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे डेली चार्ट में. मोमेंटम ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया था इस स्टॉक पे, बट आज एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था. इट वाज ट्रेडिंग एट नियर अबाउट 299 300 इन द मॉर्निंग, और थोड़ा सा हाई लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है. बट आई थिंक इफ AB कैपिटल क्लोजेस अबाउट 295 के ऊपर एक अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है AB कैपिटल में, so chances are that the price can move up even higher. The volumes have also been rising since the last 3 sessions. RSI भी धीरे धीरे 60 के ऊपर मूव करते हुए नजर आ रहा है. So I think once we get a break about 295, close about 295, then chances are that even Aditya Birla Capital can move higher from the current levels. And the last stock that I want to discuss today is Asai India Glass. So if I look at Asai India, so Asai India has been holding on to its 20-day EMA. 12 सितंबर को भी 20-day EMA से सपोर्ट लेके ऊपर आया. यहीं पर 19 सितंबर भी देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आया है.
ADX is kind of improving. RSI, it's hovering around that 55 to 60 mark. Also one good thing it is, अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से मूव होते हुए नजर आ रहा है डेली चार्ट पर. इसका एक प्रीवियस हाई अराउंड 922. सो इफ वी गेट अ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबाउट 922, chances are that SAI glass can move up higher with around 865, 870 acting as a strong support for the stock. So these are some of the sectors and these stocks that you can keep in your radar. So that's all from today's bid market session. And now let us start off with the Q&A. So if you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box and I'll be happy to answer them. Sudhakar ji, I hope the concept of wages was clear. Rakesh ji saying, according to geographic expert, this manifestation of de-dollarization through crypto, while other major economies is doing through gold and silver. Yeah, possible, Rakesh ji. Let's see how's the trajectory for USD INR over the course. So Mohit ji is asking for RBL Bank. So if I look at RBL Bank, सी फिलहाल के लिए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है मोहित जी. आई थिंक ये इसका ब्रेकआउट के लिए आप वेट करना. अगर ये 278 280 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, आई थिंक दैट कैन बी अ गुड लेवल फॉर फ्रेश एंट्री इन आरबीएल बैंक. अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेट कर रहा है. आई थिंक लेट इट कंसोलिडेट नाउ, वेट फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट अबाउट 278 280. शमी जी इज आस्किंग VMS TMT. Which stock is अच्छा this one. Okay. अच्छा अच्छा, ये आज का लिस्टेड स्टॉक है राइट. सो आई थिंक ये लिस्ट होके ही ये नीचे चला गया. वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू अबाउट कि इसका क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, बिकॉज ये आज ही लिस्ट हुआ है VMS. सो मे बी ऑलमोस्ट 200 से 105 से 99 आ चुका है. टू अर्ली टू से कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा. लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज शमी जी. आई थिंक देन वी कैन काइंड ऑफ revisit this stock again. चंपा जी इज आस्किंग फॉर मिंडा कॉप. सो मिंडा कॉप की हम बात करें, या सो मिंडा कॉप इज गुड. ये पिछले 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है उससे बाहर आया है आज, और looks like we might get a strong breakout today. There is a good rise in the volumes as well, almost 14.7 million shares traded today. ADX rising, RSI be rising. I think you can look at current levels with around 550 as a SL or a stop loss. सो ये जो आज का डे लो है वहीं पर आप स्टॉप लॉस लेके इसको चल सकते हो. समान कैपिटल वर्सेस बजाज हाउसिंग फाइनेंस. सो समान कैपिटल and Bajaj Housing Finance. So between the two, I think Saman Capital, अगर आप देखोगे रेशियो चार्ट है Saman Capital by Bajaj Housing Finance. So the ratio line is rising. That means Saman Capital is relatively outperforming Bajaj Housing Finance as well. So between the two, I think Saman Capital looks good. Archana ji is asking for ABFRL for long term. ABFRL, see, if I look at the monthly chart, so अगर मैं monthly chart के basis पे देखो, it's good. अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट पे 100 मंथ जो EMA है वो होल्ड किया है यहाँ पे. So around 70 is a good SL level. Obviously लॉन्ग टर्म में हम SL नहीं लगाते, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 70 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं अर्चना जी. So around 70 is the level to watch out in Aditya Birla. I think at least on the short term it can move towards 115 120 levels. That is where the previous high is placed. Motherson is good right now. It is in good momentum as well. तो मदरसन अगर हम देखेंगे तो एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव हो रहा है. आई थिंक 70 इज वेयर द एसएल इज द सपोर्ट इज प्लेस्ड फॉर मदरसन. आई थिंक ये अगर इसका प्रीवियस हाई अराउंड 145 150 है, आई थिंक इट कैन मूव टुवर्ड्स दैट लेवल इन द शॉर्ट टर्म. But if it breaks past 150, chances are that it can move up even higher. So these are, I think both the stocks are good. I think you can continue to hold them. Any other doubts, any other queries, do let me know in the chat box, guys. I'll be happy to answer them. Anthem Biosciences. Again, back to
can't really say because I think the इतना डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे हम टेक्निकली एक व्यू बना पाए एंथम में, बट आई थिंक एंथम अराउंड 780 के आसपास ये जहाँ पे गैप अप हुआ था, this is the level where you can keep a support and you can consider this level as a stop loss for the stock here. HFCL की अगर हम बात करें, सो HFCL सी ये पुल बैक बॉटम से पुल बैक हमें नजर आया, बट आई फील अभी भी वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है. आई थिंक वंस वी गेट अ ब्रेकआउट अबाउट 78 80, chances are that we can see pullback extending to 85 86, but wait for breakout above 78 80 in HFCL. If you look at Ola Electric, so Ola Electric again, एक strong rally के बाद the momentum has kind of dried up. But I think for Ola to move up higher, it needs to again break above 70 72. अगर ये previous high के ऊपर जाता है, then maybe you can consider. But I think the support is around 55. If it goes below 55, it's better to exit Ola Electric. Prajna ji, Mazdok bought at 2880. So if I look at Mazdok, 2880, I think you can continue to hold. So around 2850 is where you can keep your SL. I think if it moves again, if it goes past its previous high 3050 के ऊपर, chances are that the price can move up even higher. I think 2850 के आसपास आप SL रख सकते हो and you can hold. Tata Motors, see Tata Motors, like I said, despite the outperformance in the auto space, टाटा मोटर्स ने कभी तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर नहीं आया. बट आई फील टाटा मोटर्स जब तक वो 725 730 के पार नहीं कर जाता है, आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड टाटा मोटर्स. Was a trend for ACC. So ACC, not a strong trend in ACC. Because structurally it's not able to take out its previous major highs here. So as long as it doesn't go above 2020 2030, I think the trend is likely to remain sideways to negative. So I think avoid ACC for now. If I look at Tata Power, सो अगर मैं टाटा पावर की बात करूं यहाँ पे, सो टाटा पावर अगेन इट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग, सो वी नीड अ ब्रेकआउट अबाउ 400. आई थिंक वंस वी गो अबाउ 400, chances are that it can move towards 415, and on the downside around 385, that is likely to act as a support for the stock here. I think above 400 के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, राकेश जी. Sushmita ji is asking for Adani Ports. Adani Ports is good. Structure positive है. I think Adani Ports wait for a breakout about 1460. इसके ऊपर breakout मिलता है. I think it can go towards 1500. Enrin you can continue to hold. ये जो prior swing low around 3410, वहाँ पे आप SL रख के इसको आप hold कर सकते हो. If you want, you can book some profits. Maybe 60-70% प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हो. मे बी द रिमेनिंग 30% आप 3410 3415 के आसपास आप ट्रेल करके जा सकते हो. बिटवीन BL एंड पारस डिफेंस, so it's kind of mixed. So relatively BL is performing better than Paris Defense, but I think that अगर आप देखोगे रेशियो चार्ट इज ऑलमोस्ट साइडवेज में है. So very difficult to say to pick one between the two, but I feel both are equally good. But if the ratio line moves higher, let's say, then BL can outperform. But if the ratio line moves lower, then chances are that Paris Defense can outperform your. गणेश जी, मेरे ऐप में तो सेंसेक्स का ग्रीक्स दिखाई दे रहा है. आई थिंक मैंने चेक किया था. I think for some reason, I don't know why is it not, you're not able to see Greeks there. But I'm able to see Greeks for all the stocks, Sensex and Nifty as well. Shankar ji is asking for emphasis. See, emphasis is good. I think right now वो जो H1B visa रे उसके वजह से that is kind of थोड़ा selling pressure आ गया है emphasis में.
Avoid emphasis at the current levels. It's at its 200-day EMA. Let's wait for some reversal signs and emphasis now. Avoid bottom fishing at the current level. Let's see if it's able to hold on to its 200-day EMA, which is around 2,730. See, because if it breaks this level, then chances are that the price can move lower. But if it goes up, then we can reconsider this again. नहीं आता ग्रीक्स में भी आप एक बार सपोर्ट में आप मेल डाल दो एसबीआई सिक्योरिटीज का, या आप आपके रिलेशनशिप मैनेजर से भी आप बात कर सकते हो. उनको एक बार बता देना कि ग्रीक्स नहीं आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई एम एबल टू सी, पता नहीं आपके इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है. एक बार डू ड्रॉप इन अ मेल एज वेल सो दैट आई हैव आल्सो इन्फॉर्म, बिकॉज मैं प्रोडक्ट टीम से भी कल मैंने बात किया था, बिकॉज मेरे ऐप में दिख रहा था. So they were like पता नहीं क्या issue है. So if you can give your ID and you can also mention कि आपका Greeks नहीं दिख रहा है, I think then I can take that up with the product team here. So आप आपके RM से एक बार बात कर सकते हो, या आप SBI Securities के support में you can just drop in a mail so that I can actually forward that mail and talk to the team about it. Sudhakar ji, is it right time to take SBI Consumer Index? I'm not aware of SBI Consumer Index mutual fund, Sudhakar ji, because I haven't seen that fund here. So let me see. Let me look at the fund today. Maybe I can talk about that fund tomorrow. I honestly haven't got time to look at the Consumer Index mutual fund here. Adani Power, you have. Let me see. Adani Power. Adani Power, I think you can hold your position until, see, if you want, you can book some profits at the current levels, and the remaining you can maybe hold with an SL of 135. So as long as it is above 135, you can hold on to it. Nanji is saying, also want to appreciate your conduct very well. In short time, I've learned so much on technicals just watching the screens too. I thank you so much, Nanji. I think that is the objective. So that the main purpose is, if you see how our mid-market sessions are placed, we talk about the global markets, FII positioning, what the macro indicators look like, what is the key levels for all the three indices, which are the sectors that are outperforming, which are the stocks that are doing well, how do you read stocks, how do you look at breakouts, and we've been doing almost, I think we must have done at least around 90 sessions until now. We started this in the month of May. I think 12th of May is when we started doing this mid-market sessions, and I think almost 9, we are nearing about 100 sessions now. I think this will hopefully we keep on continuing like this. Nikhil ji is saying option chain mein it has market data option at the top right, and next to it there is a Greeks option. It needs to be selected. So I think Shami ji and Ganesh ji, I think Nikhil ji has mentioned here, आप option chain में जाओगे, ऊपर market data option है, वहाँ पे आपको एक टॉगल दिखेगा, वहाँ पे आप ग्रीक्स पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको ग्रीक्स मिल जाएगा. बिकॉज सी दिखना तो चाहिए, बिकॉज मेरे ऐप में तो दिख रहा है. आई थिंक निखिल जी कैन ऑल्सो सी इट. सो आई एम श्योर आपको भी दिखना ही चाहिए. पता नहीं क्यों ग्रीक्स नहीं दिख रहा है आपको. नंजी इज आस्किंग फॉर नियोजेन केमिकल. सो नियोजेन, see structurally if you see it, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में it is hovering around its 100-day EMA here. I think wait till we get a breakout above 1600, 1610. So I think once we get a breakout above 1600, 1610, chances are that it can move higher. As of now, there are no signs of reversal. Nanji, Greeks, जैसे आपका डेल्टा, गामा, वेगा, रो, though they have an impact on your option prices as well. So if you go to SBI Securities channel, I've done a detailed webinar on Greeks. It's a 1-hour session. I've explained what Greeks are and how does it impact option prices as well. So you can go through that webinar. Shushmita ji, yes, silver piece, हम काफी टाइम से सिल्वर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. If you remember, almost जब ये $39-40 एन आउंस के लेवल पे था,
तब से हम सिल्वर बीस के बारे में देख रहे हैं कि वही से ब्रेकआउट आके अब ऑलमोस्ट $44 एन आउंस तक आ गया है. So it's good. I think you can definitely have silver bees, gold bees, nifty bees. These are all really good products, especially from a long-term perspective. सर ट्रेडिंग चार्ज इज हायर देन अदर ब्रोकर्स. पान सिंह जी, उसके लिए आपको आपके आरएम से ही बात करना होगा. कुछ टेक्निकल क्वेरी है, एनीथिंग रिलेटेड टू चार्ट्स यू कैन आस्क मी. Apart from that, see, these are, it's not a decision that I make. Sudhakar ji saying, great sir, regarding 100 knowledgeable sessions educate on fundamentals. Thank you so much, Sudhakar ji. And also guys, one important announcement. Today there is one more webinar happening today evening at 4 o'clock. So we are going to learn about Bollinger Bands. What are the 10 unique ways to trade Bollinger Bands? So that session is happening. I'll be doing the session today at 4 o'clock on SBI Securities channel. So looking forward to your presence there, guys. Okay, so that's all from my end. I hope today's session was informative. See you all at 4 o'clock for the webinar on Bollinger Bands. Until then, take care and stay safe, guys. I'll see you all soon. Take care, guys.